Well, hi there. Warm welcome. You're watching Blueprint Explosive Exclusive with me, Meghna Dekha, and this is the Election Premier League. Well, it has been 48 hours since the centre implemented the rules of CAA. So far, from the opposition, we have heard the often repeated refrains of it being discriminatory, arbitrary, and also polarizing right ahead of the polls. Well, today, a fresh narrative has been peddled by Delhi Chief Minister Kejriwal. He said that the BJP government at the centre has opened the floodgates for the arrival of a large number of migrants from Pakistan and Bangladesh into India. Urging people to vote against the BJP in the upcoming Lok Sabha polls, Kejriwal has said that CAA is just a BJP bid to strengthen its vote bank in the states where it has less chances of winning. While calling the citizenship a dangerous law, the Aam Aadmi Party convener has repeatedly harped on Pakistani angle in his speech. In fact, trying to dive home the very point that Indians' rights will be snatched away, will be taken away to provide for those who are being brought in from the other nations like Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Listen in to this. ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। कि ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया और उनको चुन चुन के इस तरह से देश के अलग अलग भागों में बसाया गया, जिससे जहां जहां बीजेपी के वोट कम हैं वहां झुग्गियां डाल के अगर इन लोगों को वहां बसाया गया तो वहां बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। Well, the BJP has slammed Arvind Kejriwal's statement, but Congress stands by its alliance's comments. Listen in. तो मित्रों, मुझे कहना था, केजरीवाल जी तो कुछ नए नए तक रोज निकालते हैं, छोड़ दीजिए उनको। सबकी सियासी जमीन खिसक रही है, इसलिए हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि सीए कानून बनाया गया है प्रताड़ित लोगों के लिए, जो अपनी आस्था के कारण प्रताड़ित होकर आए, और इसके बारे में और कृपया करके झूठ, गलतफहमी फैलाना समाप्त करें। केजरीवाल जी ने कहा है वो भी एक समस्या होगी। जाहिर है कि जब लोग बाहर से आएंगे उनको आप सिटीजनशिप दीजिएगा, नागरिकता दीजिएगा, तो उनके सिर्फ नागरिकता देने से तो काम नहीं चलेगा, उनको उनके लिए रहने का इंतजाम करना होगा, उनके लिए नौकरी का इंतजाम करना होगा। Well, if Kejriwal made it in India versus Pakistan analogy that he has drawn, Uddhav Thackeray has brought in patriotism angle. In fact, the leader whose party, despite having split from the I.N.D.I.A, had voted in favor of the CAA bill in Lok Sabha, now says that it is not patriotic. In fact, during his 2-day Vidarbha visit, which had happened in preparation for the general elections, Uddhav Thackeray has stated that CAA is the BJP's election jumla, and that they are trying to now create discrimination and divisions between religions and creating riots. And the face-off is between patriots in the India alliance, I.N.D.I.A bloc, and the haters who are ruling in the N.D.A. की ही जी आता उद्याची निवडणूक होणार आहे, एका बाजूला भाजपा आहे जो धर्माधर्मामध्ये द्वेष पसरवतो आहे, घटना बदल करू इच्छितो आहे,
आणि दुसऱ्या बाजूला इंडिया नावाची आपली जी आघाडी झाली ती देशभक्तांची आघाडी आहे. म्हणजे ही निवडणूक देशभक्त आणि द्वेषभक्त अशी होणार आहे. सांगा तुम्ही कोणाच्या बाजूला, तुम्ही देशभक्त आहात की द्वेषभक्त आहात? आणि जर बाहेरच्या देशातील हिंदूंना तुम्ही आपल्या देशात घेत असाल जरूर घ्या, पण जे घर सोडून पळून गेलेले, पळावं लागलेले काश्मीरी पंडित आहेत त्यांना काश्मीरमध्ये पुन्हा सुरक्षित तुम्ही नेऊन दाखवा पहिलं आणि मग या गोष्टी करा. Well, let me go across to our panelists. Joining us today on the show, we have Amit Tiwari, Delhi BJP spokesperson. Also, Parvinder Singh Sethi is joining us, a political analyst. Amit Tiwari ji, I'm going to come to you first because this is interesting. Ever since the CAA rules were notified, pehle bola ki this is bhatkave ki rajniti. Then they said that ये पोल्स के पहले पोलराइजेशन हो रहा है. आज एक नया नैरेटिव शुरू हुआ है. दिस न्यू नैरेटिव बाय अरविंद केजरीवाल इज सेइंग दैट इंडियाज रिसोर्सेज आर बीइंग स्पेंट ऑन पाकिस्तानीज. हाउ देन डू यू फील दैट द गोल पोस्ट मे बी चेंजिंग? Yes, definitely. If you recall, if you recollect all their statements that they made earlier, when the act itself was passed, what was the issue? The issue was they tried to mislead the nation by saying that the people will lose their citizenship. Yes. That was not the case. Now today when the rules are being framed and they are being implemented, they are now today conscious of the fact that these people are not going to give vote to India Alliance. Rather, they will prefer to vote in favor of BJP because BJP is the one who has thought about them and who has now brought this legislation. Now, having felt that they are not going to get their vote, they want to mislead the other people in the city, rather in the country, by saying that your resources are being driven, your resources are being now given to somebody else. This is precisely what way back in 1905 Britishers did in India when they partitioned Bengal. They tried to divided the community on the basis of religion, and then they said that each religion has contradictory claims. And therefore, that is how the separatism or the communalism started in this country. Now today, Kejriwal's statement, what is he saying? He's saying that roughly around 1.5 crore, 2 crore people will be allowed to enter in the capital city or in the entire country. We all live in our homes. Are we ready to leave our home? No. Under compelling circumstances, only people along with their children, in order to protect their life, their dignity, they take refuge. And this is what precisely had happened with the minorities in Afghanistan, Pakistan and Bangladesh. So having left with no other option when their sisters and daughters were raped, when their houses were grabbed, when their properties were grabbed, when they were assaulted, brutally killed, they took shelter in India, and there is a cut-off date that is 31st of December 2014 in the rules itself, which say that those who have already migrated to India from these 3 countries and have applied for citizenship prior to 31st of December 2014, they are going to be getting citizenship in this country. Yes. So the Kejriwal statement that 1.5 crore, 2 crore people are now being allowed to enter in India as if the international borders are opened, floodgates are open, that anybody can enter. All these are false statements. And what is he saying? He's saying that the law and order situation will arise. These people are already living in the country. Yes. They have already migrated. Is there any law and order problem? You recall that way back in 1947 also, if you talk about Delhi, entire Jangpura, entire Rajouri Garden, Tilak Nagar, all these people were inhabited by those who migrated. Did they create law and order problem? Merely because they are trying to appease the Muslim community that we are opposing. Is that so? Parvinder Singh Sethi, is that so? That 10 years, these people, whoever would have applied under CAA, whoever is going to apply, for 10 years there will be no such law and order situation which has been created by them. But now, the spin is being given that if you back CAA, this is unpatriotic. Uddhav Thackeray himself changing his own stand there. His party went and voted in the parliament. Now he says that it is unpatriotic. Arvind Kejriwal 10 years ke baad bol rahe that there may be law and order. Mamta Banerjee first says I will hold a protest. Then she cancelled her own protest. Is somewhere the India partners losing sight of what their main goal is and whom they are pandering towards?
नहीं, देखिए, मैं जो सीए समझता हूँ, जिस प्रकार अभी उन्होंने बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लोग यहाँ पे वो प्रताड़ित हुए हैं, वहाँ पे अपनी धार्मिक जो 6 कम्युनिटीज़ हैं, चाहे हिंदू है, चाहे सिख हैं, चाहे पारसी हैं, चाहे जैनी हैं, चाहे बौद्धी हैं, उन लोगों को, वो लोग जो 2014 से पहले यहाँ बसे हुए हैं, जिस प्रकार दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने भी इसके ऊपर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी कि अफगानिस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के लोगों को जो आए हैं उनको नागरिकता दी जाए, उसके ऊपर ये बिल आया। और जो 2014 से पहले के लोग जो ऑलरेडी यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन अब इस बिल के अंदर और क्या क्या क्लॉजेज हैं, जो उसके बाद आए हुए लोग हैं या उसके बाद जो अभी जो लोग आएंगे उनको किस प्रकार से नागरिकता दी जाएगी, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया अरविंद केजरीवाल ने। जो सीएए का जो पहले जो ड्राफ्ट हुआ था, उसके अंदर 2014 से पहले जो लोग आए हैं, जो पहले से यहाँ रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का प्रावधान है। लेकिन मैं ये समझता हूँ, जिस प्रकार कश्मीरी पंडित हैं, उनको आज तक तो आपने कश्मीर में ना स्थापित करा, ना दिल्ली के अंदर उनको रोजगार दिया। वो भी जगह जगह बेचारे राशन के लिए, और उनके लोग और बच्चे सारी जगह पैसा इकट्ठा करते हैं, राशन इकट्ठा करते हैं, कैंपों में रहते हैं। उसी प्रकार से जो और लोग हैं जो कुंभ के मेले से पाकिस्तान में आए थे, उनको भी भारत सरकार ने कोई मदद नहीं दी। मेरा ये कहना ये है कि इसके ऊपर जो नए क्लॉजेज हैं, उसके ऊपर अरविंद केजरीवाल ने टिप्पणी करी है कि और जो लोग आएंगे उनको आप किस प्रकार से रोजगार देंगे। ऑपोजिशन ये बोल रही है कि जो पहले के रिफ्यूजीज हैं, उनके लिए तो आपने कुछ किया नहीं अब तक, एज पर द ऑपोजिशन एंड इट्स एको चेंबर्स। वो पूछ रहे हैं, व्हाई डोंट यू वर्क फॉर देम फर्स्ट, उसके बाद आप 31 दिसंबर 2014 के डेडलाइन पे देखिए। जो लोग पहले से माइग्रेट होके आए थे, those who had already migrated, aren't they living? It's only that they do not have their citizenship in this country, and merely because if some country, lot many rights are not given to that fellow, even some of the fundamental rights such as Article 14 is not given to those who are not citizens in this country. Right. Now, so far as Kashmiri Pandit issue, which my friend raised, at least we are the only government who thought about Kashmiri Pandits, removed 370, and now the rehabilitation process has begun. So whenever we are taking up issues, we are clearing the debt. Answer that. Point by point, Ravinder Singh Sethi, you have 30 seconds to rebut that. BJP says we are the only ones who've actually worked for Kashmiri Pandits. How can you draw that analogy? We are the ones who abrogated Article 370. नहीं, आई एग्री, मैं इनकी बात से एग्री करता कि इन्होंने 370 हटाया, वहाँ पे एक नया वो लाने का प्रयास करा। लेकिन जो कश्मीरी, मुझे ये बताएं कितने कश्मीरी पंडितों को you've agreed कि ये बीजेपी ने किया है। Unfortunately, gentlemen, we are running out of time, but at least I like the way candidly you have agreed, sir, that yes, indeed, BJP did go take a huge jump when it comes to trying to rehabilitate the Kashmiri Pandits. But thank you so much, gentlemen, for joining us. Amit Tiwari as well as Parvinder Singh Sethi here on the show. Without a short break. One leader in the opposition who Annamalai respects the most. There can't be such a drought.